This conference will now be recorded. Fine. So I'm just going to define you about the concept of VMSS. And any idea, any theoretical discussion in case of our VMSS services? No, sir. VMSS. No problem. So VMSS is basically related to the virtual machine skill set that can give us option to uh, create a virtual machine in cluster. ठीक है, थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है इसका. हटके इन द सेंस यू कैन से दैट कि जैसे नॉर्मल Hmm. वर्चुअल मशीन तैयार करते हैं तो नॉर्मल वर्चुअल मशीन के केस में क्या होता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट ओनली वन वर्चुअल मशीन एट ए टाइम. एक बार में एक ही वर्चुअल मशीन तैयार होती है. VMSS क्या करता है, इट कैन गिव अस ऑप्शन टू मैनेज द VM विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्केलिंग. तो ऐसे अभी हमने ऑटो स्केलिंग के बारे में बात नहीं की थी. आई थिंक वी डिस्कस्ड अबाउट द अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी ओनली, राइट? Yes, sir. तो बोथ ऑप्शन कैन हेल्प यू टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. इन दोनों सर्विस का जो एजेंडा है ना, बोथ सर्विस आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. कहीं ना कहीं ये डाउन टाइम से हमारे एनवायरमेंट को बचाते हैं एंड दे गिव अस अ फॉल्ट टॉलरेंस काइंड ऑफ थिंग. So it's our responsibility. We should know about the actual difference between about availability and auto scaling. Azure VMSS, ठीक है, virtual machine install set. So for better understanding, we need to clear the difference between high availability and what about other auto scaling. क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आई डोंट वांट टू कि कोई कंफ्यूजन हो हमें इन दोनों पार्ट को समझने के लिए. So I'm Yes, going sir. to define you about the actual difference between each other, because if you proceed with virtual machines only, so in case of virtual machine management, we are able to configure uh, uh, HA, high availability, and in case of VMSS services, we are able to manage the auto scaling service. So we are on page of compute part. So we have another option in compute services, which is considered as a virtual machine style set. So in the virtual machine style set, in the compute part, we have a two important part like as a high availability, and second is related to the auto scaling. So in case of high availability, we have already discussed about the gap between availability set and availability zone. Is it correct? Yes, sir. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अवेलेबिलिटी सेट एंड जोन? एक सिंगल वर्ड में हम अगर इसको डिफाइन करते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन को? Availability set basically means availability set within one sort of a zone. हम्म. Uh, and the availability zone is basically जो logical group of VMs होता है but in different zones. So in case we can say that कि जो अवेलेबिलिटी सेट या अवेलेबिलिटी जोन है, which is responsible to protect our VM through hardware, right? If hardware changes या hardware failure होता है हाँ, तो उस केस में fault हमारी tolerance के लिए. ये जोन हो गया और ये सेट हो गया. So we have a two different option. यही दोनों option है, ठीक है? So Yes. what exactly happen in case of availability? If you created your virtual machine and you know that कि जो भी VM आप तैयार करते हैं, which is a part of host, ये host का part रहता है. So if any problem occurred with backend, so availability zone and availability set can help you to access your VM again. Is it clear? Yes, sir. Yes. Auto scaling is a totally separate from the availability set and zone, because in case of auto scaling, we are able to create our virtual machine in cluster. Like you created a 3 VM, the group of 3 virtual machine, and you hosted your own application or website. इस पे हमने अपनी applications को या website को host कर रखी.
तो एज यू नो दैट एप्लीकेशन या जो वेबसाइट होती है, जब हम वेब सर्वर स्टैब्लिश करते हैं, एप्लीकेशन सर्वर स्टैब्लिश करते हैं, तो वी डोंट नो कि हमारे पास कितने हिट्स आ जाएंगे. Hits in the sense I'm talking about the number of customers they want to access our application, number of customers they want to open our website. ठीक है ना. ई कॉमर्स की वेबसाइट है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक ट्रैफिक कम थे, 5,000 6,000 यूजर्स आते थे, विजिट करते थे पूरे दिन में. एंड बट ड्यू टू डिजिटल मार्केटिंग, आपने काफी ज्यादा वर्क किया डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एंड लोग धीरे धीरे जानना स्टार्ट किए. तो जो 5,000 कस्टमर थे डेली बेसिस पे, वो अप टू 25,000 के आसपास कन्वर्ट हो चुके हैं. Got it? What I'm saying? Right, right, sir. Yes. In this case, we don't know कि हमारे कस्टमर कब बढ़ जाएंगे. We really don't know about कि हमारे कस्टमर कब तक बढ़ जाएंगे. So in this case, auto scaling is the best way, because what happen in case of auto scaling, अगर आपने 3 सिस्टम लगा रखे हैं अपने क्लस्टर पे, और इन 3 सिस्टम की कैपेसिटी है 10,000 हिट को संभालने की. 10,000 हिट्स यानी 10,000 लोग इस वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं एट ए टाइम. कहीं अगर ये जो 10,000 हिट है 25,000 में कन्वर्ट होता है या 20,000 में कन्वर्ट होता है, तो ऑटो स्केलिंग कम इनटू द पिक्चर, और एज इट इज 10,000 मैक्सिमम लिमिट थी, 20,000 हमारे पास हिट आ रही है, 25,000 हिट आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, Azure auto scaling will add one more virtual machine or two more virtual machine in the backend. जिससे ये 25,000 कस्टमर या 20,000 जो कस्टमर्स है हमारे, वो आसानी से आपके एप्लीकेशन या वेबसाइट को एक्सेस कर पाए. इज इट क्लियर? Yes, sir. This is the actual use of auto scaling. Second important part, the auto scaling service is categorized in two different parts. One is scale out, okay, and second one is related to the scale in. The meaning of scale out means your CPU consumption is more than 75%. And in case of scale out in, your CPU consumption is less than 25%. जो सीपीयू कंजप्शन है वो लेस देन है, एंड जो मैक्सिमम है वो 75%. तो इन केस ऑफ ऑटो स्केलिंग इट विल ऐड द वर्चुअल मशीन. और ये क्या करेगा, इट विल रिमूव द वर्चुअल मशीन. मीन्स इफ यू आर नॉट यूजिंग योर वर्चुअल मशीन प्रॉपरली, अगर आपने वीएम तैयार कर रखे हैं और उस वीएम का कोई यूज नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू यू, तो सीपीयू कंजप्शन नहीं हो रहा है, 25% सीपीयू कंजप्शन हो रहा है, तो उस केस में क्या दिक्कत आएगी, इस केस में इशूज ये आएगा कि व्हाई यू नीड टू पे. 4 सिस्टम हमने क्लस्टर में लगा रखे हैं, सीपीयू कंजप्शन जस्ट 25%, मीन्स अपने पास जो हिट आने चाहिए थे 10,000 के आसपास, वो जस्ट वी आर गेटिंग 2,000 to 3,000 हिट्स. तो कहीं ना कहीं बिल देने की Scaling हो रिक्वायरमेंट, जाएगा. so it will be remove the virtual machine from the cluster. So this is the actual you can say that usage of auto scaling that we will cover in case of our virtual machine install set. Is it fine? Yes, sir. Back to the Azure portal and open compute services, because you know that the VMSS virtual machine install set is a part of our compute services. Next, need to click on create. It will create a cluster. एक तरीके का ग्रुप बनाएगा virtual machines का. Provide the basic information. AZ-104 class. Provide the name of your virtual machine. Not virtual machine, cluster. Training set. Okay. Training set is our install set name. I want to purchase in location of Central US. Don't want to proceed with the availability zone. सर इसमें अवेलेबिलिटी जोन का क्या वो रहेगा अगर हम इसमें अवेलेबिलिटी जोन करते हैं Same तो? location. 1 2 3 डिफरेंट लोकेशन में हम अपने रिसोर्स को रख सकते हैं. तो वो उतनी ही वर्चुअल मशीन स्किल सेट की कॉपीज उन जोन में भी बनाएगा? एग्जैक्टली पूरे क्लस्टर की कॉपी बनाएगा. तो जितनी पूरी भी क्लस्टर वीएम्स की कॉपी बनाएगा? पूरे हाँ. क्लस्टर की कॉपी तो वो तो बनाएगा. मतलब 3 गुना प्राइस हो जाएगा, 2 गुना प्राइस हो जाएगा जितना भी आप Definitely, अवेलेबिलिटी जोन में कराओगे. you have to pay much amount. ओके ओके सर. Okay, so see, now need to provide the information about region and zone. Org station is categorized into different parts. पहला है uniform, दूसरा है flexible. Actually, the meaning of uniform and flexible.
जैसे अभी आगे वाले स्टेप में ना हमें एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इंस्टेंस, हाउ मेनी इंस्टेंस यू वांट टू क्रिएट। तो जो नंबर ऑफ इंस्टेंस है, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में कितना डिसाइड कर लिया। स्टार्टिंग में आपने प्लान किया कि आई जस्ट वांट टू क्रिएट 3 वर्चुअल मशीन। अगर आप यूनिफॉर्म में जाते हैं तो वो 3 वर्चुअल मशीन फिक्स हो जाएगी। यू डोंट हैव ऑप्शन टू चेंज द मैनुअल। ऑटो स्केलिंग से मशीनें ऐड हो सकती हैं, रिमूव हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से मैनुअली उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्लस्टर में। इज इट ओके? ये सब। फ्लेक्सिबल के केस में क्या है कि आप अपने हिसाब से वीएम्स जो अवेलेबल हैं अपने क्लस्टर के ऊपर, उनको आप डिसाइड कर सकते हो कि हाउ मच वीएम यू वांट टू पुट ऑन क्लस्टर। 2 3 5 15 जितने भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। ठीक है। राइट सर। I don't want to proceed with flexible. I'm going to proceed with uniform security as we discussed. Types of operating systems: server 2012, data center, small disk. We have to pay 2600, 2 core CPU, 4 GB RAM each. Each virtual machine की configuration है ये। 3 4 5 जितना आप डिसाइड करेंगे उन सभी वीएम का कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉमन फॉर एवरीवन। यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर entire virtual machines. सर ये वर्चुअल मशीन्स तो वो यूजुअली होंगी जिन पे हम जैसे कि ये वेब सर्वर वाले वीएम होंगे या फिर ऐप सर्वर वाले वीएम होंगे ना। इन पे तो हम क्लाइंट तो हम इन पे डिप्लॉय नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब वी वांट हाई अवेलेबिलिटी फॉर आवर एप्लीकेशन होस्ट। ये नॉर्मल यूजेज के लिए तो नहीं होगा। दैट्स इज दैट राइट? मतलब No, 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 sorry. Normal user कौन से? ये मतलब जो हम ये वर्चुअल मशीन स्केल सेट बना रहे हैं इस हम्म। वीएम पे हम क्या वेब सर्वर डिप्लॉय करेंगे या एप्लीकेशन सर्वर डिप्लॉय करेंगे? सर्वर के लिए ये होगा ना, इट इज नॉट फॉर क्लाइंट। एग्जैक्टली, ऐसा मैं ना क्लाइंट के लिए हम इतना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे भी नहीं, इट इज इन्वेस्ट नॉट। करने का ही मतलब ही नहीं। दिस इज फॉर तो वी एप्लीकेशन सर्वर या वेबसाइट सर्वर ऐसे सब। एग्जैक्टली वेब सर्वर या डेटाबेस सर्वर को भी आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या एप्लीकेशन सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, so that time you need to proceed. राइट सर। Next, this is another page like as a virtual machine creation. यहाँ पे hard disk information है, so you have option to add new hard drive, but I don't want to add right now. We will add it once our what you can say that setup is ready, means virtual machine is ready to use. सर मेरे को एक क्वेश्चन था, मैं जब भी क्रिएट करता था वीएम तो डिस्क पे Hmm. आते तो हमें बाय डिफॉल्ट कितना डिस्क मिलता है, वो कहाँ पे हमें पता चलता है? व्हाट वुड बी आवर See, डिस्क साइज? disk size according to the operating system depend करता है। राइट, ओके। तो जो हमने वहाँ पे वीएम का जो इमेज सिलेक्ट किया, वो हम्म। इमेज सिलेक्ट करेंगे तब हमें पता चल जाएगा वहाँ पे साइज? मैं आपको बता देता हूँ क्या है। डिफॉल्ट वीएम डिस्क जो है वो 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। एक है नॉर्मल डिस्क 127, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क। ओके। ठीक है। दूसरा आता है स्मॉल डिस्क, ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा 30 GB का स्पेस। यहीं पे अगर आप लिनक्स पे प्रोसीड करते हैं, दिस टू फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप यहाँ पे रेड हैट का किसी प्रोडक्ट पे मूव करते हैं तो उसमें एनी हाउ आपको 30 GB की स्पेस मिलेगी। इट्स अ फिक्स, नो मैटर कि आप कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। आप B2S सेलेक्ट कर रहे हैं, B3 एस सेलेक्ट कर रहे हैं, S1 सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई सा भी डजंट मैटर। है ना। तो ये 2 कोर का सीपीयू 4 GB रैम, ये 2 कोर का सीपीयू 8 GB रैम। ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है बट हार्ड डिस्क जो है ना फिक्स रहेगी। वो फिक्स रहेगी एंड देन यू कैन ऐड एज मच एज यू एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन एक्सीड द वांट। सेम लिमिट। ये जो 127 मिली है ना, इसको आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। गॉट राइट। इट गॉट इट, थैंक यू, यस गॉट इट। राइट, बट बाय डिफॉल्ट आप ये 3 सिनेरियो माइंड में लेकर चलेंगे। हार्डवेयर कुछ भी लगाओ, आप रैम कितनी भी लगाओ, सीपीयू कितना भी लगाओ, बट ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रखा गया है ना, वो इन्हीं तीनों फॉर्मेट में रखा गया है। इनिशियली इतना ही मिलेगा, ओके। एग्जैक्टली राइट क्योंकि टेम्पलेट बना के रखेंगे है ना। बैकएंड में सर। क्या यस। करते हैं, इतनी जल्दी तो ओएस इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, यू नो दैट। 3 3 मिनट के अंदर हमारा वीएम से रेडी हो जाता है। 3 मिनट के अंदर कोई राइट। भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं इंस्टॉल कर सकते ना।
इसका कभी मतलब नहीं पहले से पॉसिबल। इंस्टॉल है, हमें सिर्फ टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। इज इट करेक्ट? यस सर। Cool. Next. Another important part is related to the networking, as we know that we don't have any idea about networking right now. अभी अपने पास कुछ भी आइडिया नहीं है नेटवर्किंग से रिलेटेड। इज इट करेक्ट? यस सर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेटवर्किंग, जिसमें वीनेट वगैरह देखेंगे। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद डिफॉल्ट नेटवर्क। दिस इज कंसीडर्ड एज ए डिफॉल्ट नेटवर्क, जिसमें हमें आईपी एड्रेस मिल रही है 10 की सीरीज की। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। हमें सिर्फ इसमें 3389 पोर्ट को एक्टिवेट कर देना है, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे राइट। जो एडिट का ऑप्शन है, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एडिट। और यू नो दैट नन है, आई डोंट वांट टू मेक इट नन। Click allow. Which port do we need to activate? We are RDP। planning to activate 3389 na? यस। Because we are planning to access our VM from outside the network and public IP address. The meaning of public IP address enable, ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ती है? अगर आप ये एक्टिवेट नहीं करेंगे तो हमारे VMs में कोई भी हमारे VMs की जो पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगी, हर एक वर्चुअल मशीन की एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगी, एंड आई वांट टू एक्सेस एवरी वर्चुअल मशीन सेपरेटली, so that's why I enable the public IP address. Clear? यस सर। नेटवर्क NIC कार्ड। ओके। ठीक है ना? नो नीड टू डू एनीथिंग, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। बाय डिफॉल्ट रखते हैं 10 की आईपी एड्रेस मिल रही है, 10 की आईपी एड्रेस रखेंगे। एंड व्हेन वी हैव आइडिया रिलेटेड टू द वीनेट एंड सबनेट्स, तब हम बात करेंगे इसमें कि हमें कौन सा आईपी एड्रेस क्लास चाहिए। ठीक है? ओके सर। Another important part is related to the scaling. So in case of scaling, manual and custom, so just need to click on custom, and here we are able to find a number of options. Number of instances, how many instances you want to create? 3, 2, 4, 5, 10, 100, जितने भी VMs आप बनाना चाहते हैं क्लस्टर में, by default you need to select. Talk about the minimum number of instances 1, maximum number of instances 10. ठीक है? While creating the scaling part, जब भी हम अपने वर्चुअल मशीन सॉरी एज्योर पोर्टल पे स्कैल करते हैं ना, वीएम की स्कैलिंग करते हैं, ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हाउ मेनी वीएम? सो आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ 3 वर्चुअल मशीन। यहाँ पे देखो कितना इंस्टेंस सेलेक्ट किया हमने, 3। मैक्स इंस्टेंस, मिनिमम इंस्टेंस, मैक्स इंस्टेंस। कौन सी लेनी है? मुझे नहीं पता कि स्टेट क्या है। तुम बात बैठे बात कर रहे हो तो कस्टम के रूम में बात नहीं है। About the minimum instance 8, maximum instance 10. The meaning of minimum and maximum means, as we know that scale in जब होगा ना, ये VM को रिमूव करेगा। तुम्हारा पास के रूम में जब और स्केल उसके आउट पास होगा तो ये VM को ऐड नहीं करने का काम पता करेगा। है तो यूट्रस के पास है तो यूट्रस को निकाल दो, कम से कम इंसान तो बच जाएगा ना। इन एंड आउट। तो इनके केस में कितना भी CPU कंजप्शन हो जाए, यूट्रस के एक बाहर VM आपको मिलेगी ही मिलेगी। और मैक्सिमम कितना भी CPU बढ़ बदलूंगी जाए, 10 VM से तो इनको ज्यादा ही पास है, दूंगी तो क्या हुआ दोस्तों तो अंदर एज और भी तो सिलेक्ट। बाहर निकालूंगी। 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 10 नहीं, should be you the can maximum. actually Right, right. Okay, sir. हाँ कुछ back to the portal. I'm not going to make any changes here. Think about scale out and scale in. CPU threshold, duration in minute, number of instance increase by. पहला क्या है? CPU threshold है। Duration in minute, number of instance increase. Number of instance increase by.
What I'm going to do, CPU threshold, इट्स नॉट मैंडेटरी कि 75% ही रखना है, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कितनी देर तक सीपीयू का कंजप्शन 75% के ऊपर जाए, तो मिनिमम 5 मिनट। और नंबर ऑफ इंस्टेंस एटलीस्ट एक वीएम यहाँ पे ऐड होती जाए हर बार। नाउ जो कंजप्शन है ना सीपीयू का, वो तीनों मशीनों का कॉम्बिनेशन है। इन तीनों मशीनों का कॉम्बिनेशन 75% प्लस जाएगा, तभी ये वर्चुअल मशीन को ऐड करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। 3 मशीन, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आपने 3 मशीन दिया इसलिए हमने स्टार्ट क्लस्टर ही स्टार्ट किया है 3 मशीनों क्लस्टर से। क्लस्टर 3 मशीन शुरू किया है। ओके, 3 मशीन का 75%। ओके ओके सर। करेक्ट। तो नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, अनदर स्टेप। ये तो हो गई बात किसकी, इज इट करेक्ट? यस सर। व्हाट अबाउट इन? इस इनमें कम करेगा वीएम्स अगर थ्रेशोल्ड नीचे जाएगा तो। एग्जैक्टली, तो यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट मिनिमम थ्रेशोल्ड, 25% दे देते हैं। ड्यूरेशन सेम रहेगा। यहाँ पे आपको एक पॉइंट और डिफाइन करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इंस्टेंस क्या डिक्रीज, हाउ मच, 1। कितनी वर्चुअल मशीन को ये डिलीट करेगा, एक वीएम को डिलीट करता जाएगा हर बार। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आउट। क्लियर? यस सर। Any question? Any doubt? नो नो सर, नो क्वेश्चन, नो सर। Cool. Can we proceed for next practical? यस सर। Back to the portal. यहाँ पे हम I'm not going to make any changes सिवाय duration के। 10 मिनट वेट नहीं कर सकते हम। 3 is a cluster virtual machines. Custom 75% max limit, minimum limit 25% CPU consumption. No need to do anything. Next, next, and review करेंगे और create करेंगे। It will take few minutes to create our cluster with 3 different virtual machines.
So once our VMSS is ready, we will discuss about how autoscaling can perform the task. Okay, our virtual machine is ready to use. Let me show you the options. क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे. Go to the instances, and in instances part, we are able to find n number of machines are available. Up to 3 virtual machines are available. और हर एक virtual machine की जो public IP address है वो different रहेगी from each other. Public IP address is started from 52. चलो दूसरे instance को देखते हैं because we are responsible to connect 52, 73, 166 different IP address हर एक instance की हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेगी. 175, 160 like that. अलग अलग पब्लिक आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है. इज इट ओके? यस सर. फाइन. टॉक अबाउट द VMSS कैसे परफॉर्म करेगा. सो एज वी नो दैट जो सीपीयू कंजप्शन है ना वो कहीं ना कहीं 25% से कम ही होगा. बैक टू द ट्रेनिंग इज अवर क्लस्टर. क्लिक ऑन मॉनिटरिंग पैनल एंड मॉनिटर द सीपीयू कंजप्शन हियर. ये वो प्लेस है जहां से हम अपने सीपीयू को मॉनिटर करेंगे. बिकॉज यू नो दैट हमने ऑटो स्केलिंग लगा रखी है. तो इन दिस केस यू नो दैट कि अगर सीपीयू कंजप्शन 25% से नीचे रहा तो ये क्या करेगा, वर्चुअल मशीन्स को डिलीट करना स्टार्ट कर देगा. अपनी तरफ से वर्चुअल मशीन्स को क्या करेगा, रिमूव करना स्टार्ट कर देगा. इज इट क्लियर? यस सर. तो 3 से 2 होगा, फिर 2 से 1 हो जाएगा. एक लास्ट बचेगा. मतलब एक तो रन करेगा ही करेगा. यस. बट सर हमने तो वहाँ पे मिनिमम वो कुछ 3 इंस्टेंस नहीं रखे थे, तो वो क्या 3 से भी कम होगा? नो नो नो. सी 3 इंस्टेंसेस हमने तो डिसाइड किया था कि हमने प्लान किया था कि एटलीस्ट हमारी वेबसाइट तो इतनी पॉपुलर है कि एटलीस्ट 3 इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है. गॉट इट? वी डोंट नो अबाउट द हिट्स. ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा वर्क करने के बाद भी अपने पास जो इंस्टेंस हिट है ना वो नहीं आ पा रही है. तो हिट नहीं आएगी तो सीपीयू का काम नहीं रहेगा, यूसेज नहीं रहेगा कोई भी. इज इट करेक्ट? और सीपीयू का यस. यूसेज नहीं है, वीएम का यूसेज नहीं है, तो व्हाई यू नीड टू पे. ये 5 मिनट तक वेट करेगा. अगर लोड पड़ता है तो ठीक है, अदरवाइज आप देखोगे क्लस्टर में से एक एक वर्चुअल मशीन को ये रिमूव करना स्टार्ट कर देगा अपने आप. राइट. ठीक है. ये अपनी तरफ से इंस्टेंसेस को हटाना स्टार्ट कर देगा. ठीक है. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑटो स्केलिंग. तो हमें पता होना चाहिए कि ऑटो स्केलिंग कैसे काम करता है. ठीक है ना. चलो पेज को रिफ्रेश करते हैं. 5 मिनट तक का इंतजार करेगा. 5 मिनट के बाद से ये टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा अपना कि क्या इसको कैसे हैंडल करना है. फोर्थ. तूने टिकट्स कराई है मूवी की? नहीं.
ठीक है, अब देखिए एक इंस्टेंस जो है अपने आप डिलीटिंग में जा चुका है, मीन्स सीपीयू यूसेज ना होने की वजह से इसने क्या किया, एक एक वीएम को उठा करके डिलीट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यू डोंट वांट टू पे फॉर आर वर्चुअल मशीन इफ यू आर नॉट यूजिंग योर वर्चुअल मशीन प्रॉपरली। वीएम का यूज नहीं है तो हम उस वीएम को रिमूव कर देंगे, नॉट मैनुअली, विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। इज इट ओके नाउ? राइट, यस सर। Now wait for 5 more minutes and it will remove another virtual machine. और सर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन अगर सेव होती तो उसका क्या होता? क्लस्टर है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। अच्छा, रेप्लिकेशन ही है, मतलब कॉपी है। एप्लीकेशन है ना, सब में एक ही वर्चुअल मशीन मिलेगी आपको, सब में एक ही डेटा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि सेपरेट डेटा पीएम के अकॉर्डिंग स्टोर। नो, एवरी वर्चुअल मशीन कंटेन सेम डेटा। राइट, राइट सर। Refresh the page again, it will try to check the consumption of CPU। अगर इसको रियलाइज हुआ कि चलो ठीक है, एक वर्चुअल मशीन तो डिलीट हो चुकी है, तो डेफिनेटली एक वीएम डिलीट होने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा लोड कम बढ़ेगा इन दोनों के ऊपर, और इट विल ट्राई टू वेरीफाई कि अगर सीपीयू कंजप्शन फिर से 25% से नीचे जा रहा है, तो ये क्या करेगा, एक वीएम को और डिलीट करेगा, बोलेगा कि यू आल्सो नो नीड टू अवेलेबल इन क्लस्टर, बिकॉज जब सीपीयू का कंजप्शन ही नहीं है तो वाई कस्टमर नीड टू पे। अब देखिए दूसरी वर्चुअल मशीन भी डिलीट हो चुकी है। एक वीएम आपकी परमानेंट रहेगी, भले से आपका सीपीयू कंजप्शन जीरो क्यों ना हो जाए। व्हाट इज व्हाट आई एम सेइंग? हम्म, हम्म, क्योंकि क्लस्टर में जब आपने डिसाइड किया था टू मेक क्लस्टर, मैनुअल क्लस्टर, उस केस में पहले से डिसाइड कर लिया था कि एटलीस्ट मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 वर्चुअल मशीन हमारे पास होनी ही चाहिए, करेक्ट? यस सर। So this is all about the auto scaling. I'm going to take the RDP of this VM जो हमने पहले से डिसाइड किया था, एक पब्लिक आईपी एड्रेस इसमें मेंशन है। Copy the public IP address and access with the help of any tool, you can say that। We are able to access our virtual machines RDP, और ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि आपने बैकएंड में से इसमें 3389 पोर्ट को एक्टिवेट किया था, एंड एज वी नो दैट 3389 पोर्ट व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर RDP services, remote desktop services। So this is all about you can say that VMSS virtual machine is concerned। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो, नो क्वेश्चन सर। ठीक है, so now we completed the part of entire virtual machines management। Let me know if you have any question। सो हमने वीएम स्केल सेट बनाया और हमने 3 इंस्टेंसेस उसके अंदर रखे, और जैसे जैसे उनका कंजम्पशन कम हुआ वैसे वैसे वीएम्स कम हो गए, एंड वी हैव गॉट वन रनिंग। दैट्स ऑल। क्योंकि लोड नहीं था उनके ऊपर। लोड नहीं था उनके ऊपर। और हम स्केल इन स्केल आउट का जो सीपीयू का जो परसेंटेज है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि 75% हो, 5% हो, 10% हो, कब स्केल या आउट करना है, कब स्केल इन करना यस, ये अपने आप के ऊपर डिपेंड करेगा। है। राइट, 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 हाउ राइट, एंड मच? देन वी गेट चार्ज्ड एज पर द वीएम्स which are running. एग्जैक्टली। Got it, sir. Got it. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल मशीन स्टाइल सेट।
ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. यस सर. इन केस ऑफ वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट, आई होप कि चारों जो स्टेप है हमारे पास, ऑटो स्केलिंग, सॉरी वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट के, कंप्यूट के, वो कवर हो गए हैं. और वी विल डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि हमें बैकअप भी कॉन्फ़िगर करना है, रिस्टोर भी करना है, डिजास्टर रिकवरी भी तैयार करना है. But we'll discuss in case of our management part, troubleshooting and management. Now we need to move, as per the agenda, we need to move ourselves to networking. So just wanted to know how much you comfortable with network. I'm talking about the base networking. Not very much, sir. So, but I just want to ask you something. The compute and storage section. Sorry. Uh, Let me open. वो फिनिश हो गया क्या हमारा कंप्यूट का? Compute में अभी template बचा है, बाकी basic compute हो गया है. Just quickly review the You are skill unable to understand selection. about the template if you don't have idea about the Active Directory services. Okay, so एक सेकंड ना सर, जस्ट मैं एक बार वो गाइडलाइन खोल लूँ उसका, just to double check that I have not missed anything. तो कंप्यूट इतना छोटा सा सेक्शन है सर, मतलब? I'm going to show you. Wait. These topics are remaining, which is related to the template. Okay. And in ये this पूरा part, we complete the entire services. कॉन्फ़िगर Azure Disk Encryption, Mm-hmm. मूव VM. सर इसमें कैसे करते हैं Azure Disk Encryption को, और मूव By default, VMs from? one resource to another resource group, manage VM size, add disk, configure network, redeploy VMs, availability, deploy and configure, scale set. हाँ, This is स्केल the, सेट पता चल गया, हाई अवेलेबिलिटी पता चल गया. Redeploy VMs is, when do we do those redeploy VMs? I think we'll discuss about the theoretical part of both options last class. Mein. Yes, yes, redeploy VMs, yes. Redeploy and Um, reapply. Redeploy, reapply. अच्छा, add data disks. Hard Data disk add disk is करना, that extra disk, वही हुआ ना? hard disk add करना, new hard disk हाँ add हाँ करना. हाँ हाँ, वो आ गया. Manage VM sizes. Manage VM sizes मतलब किस वे में सर, ये क्या रेफर कर रहे हैं इसको? Manage VM sizes. Remember कल हमने बात की थी कि if you purchase your virtual machine with 4 gig of RAM, 10 दिन बाद रियलाइज होता है नहीं ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन तो लो है, यू वांट टू इंक्रीज दैट विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस विद योर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, है ना? So we can तो add to the configuration menu. Okay. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन साइज. अब देखो ना, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा हमें, दिस इज द VMSS, लेकिन इसमें भी ऑप्शन दिखेगा हमें साइज का. जस्ट नीड टू क्लिक हियर, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ अवर कॉन्फ़िगरेशन पैनल. ये कॉन्फ़िगरेशन पैनल है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पैनल, है ना? Right, and then from here we can select the size and then resize Your it. system will be reboot for 30 seconds, and after 30 seconds you will be get your virtual machine again. Right, configure add पिंग data फेल disk. आएगा, पिंग फेल आएगा, बट जो कॉन्फ़िगरेशन आप चाहते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा एज इट. देन Got it. And then it will resize it. और दिस फिर इज है द लास्ट ऊपर के दो, move VMs from one resource group to another and configure Azure Disk Encryption. इंटरप्ट. फाइन, नो प्रॉब्लम. बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. Move Moving VM. our resource virtual machine from one resource to another, it's really simple. Not only for the virtual machine, किसी भी रिसोर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. Just need to click Move move, हो रहा. है ना? यहाँ पे देखो, move to the other another resource group या another subscription. Another resource group में select किया हमने. Where you want to put, this is your current location. This Right, is sir. your current location, and this one is your target location, है ना? Hmm. Azure AZ-104 में से AVD क्लास में आप AVD मूव कर, class. या एक नया बनाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे आप. This is the training set that we created. It will check the validation pending. थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. It will check the each and everything. And if everything is okay, next का ऑप्शन आएगा, रिव्यू का ऑप्शन आएगा, क्रिएट का ऑप्शन आएगा. That's it. वेट कर लेते हैं, अभी हमने प्रोसीड कर दिया है तो.
according to the capacity of your resources, जितने भी number of resources है ना, क्योंकि VMSS और VM में बहुत ज़्यादा gap है. You are trying to move your cluster है ना, और cluster में कई सारे VMs या कई सारी services हो सकती हैं. VM के केस में केवल VM के कंपोनेंट्स रहेंगे, लाइक उसकी हार्ड डिस्क हो गई या फिर उसका जो अदर ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे केवल वही रहेंगे. बट इन केस ऑफ VMSS काफी सर्विसेज हो सकती हैं. करेक्ट. दैट्स व्हाई टेकिंग टाइम. आई थिंक एवरीथिंग इज ओके. कोई भी एरर नहीं आया यहाँ पे अभी तक. तो नाउ वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद नेक्स्ट. You need to verify, you need to approve it, and check mark the understand tools script which is moved into work in the backend. Wait for a few minutes, and after that we will get our entire resources in our new resource group. जो current location है AG-104, this is a container. We are planning to move the entire resources from AG-104 to what we can say that AVD class. थोड़ा सा वेट करते हैं and then try to access it again. Still in progress.
एंड अनदर टॉपिक क्या था दूसरा इसके बाद? आकाश करनी होंगी। This conference will now be recorded. एक्चुअली वी प्रोसीडेड, हमने मूव किया था किसको अपने सॉरी VMSS सर्विसेज को किसमें वन सब्सक्रिप्शन टू वन रिसोर्स ग्रुप टू अनदर, है ना? तो रिसोर्स ग्रुप व्हाट अबाउट रिसोर्स ग्रुप? एज वी डिस्कस बिफोर, बहुत पहले हमने बात की थी कि कॉन्सेप्ट क्या होता है रिसोर्स ग्रुप का। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? रिसोर्स ग्रुप जिसके अंदर सारे रिसोर्सेज होते हैं, VMs, VNet, ये सब सारी चीजें जो भी बनती हैं वो रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनती है। वी कैन से दैट काइंड ऑफ कंटेनर, यस। it's a type of logical container which is responsible to contain the सर्विसेज, जो भी सर्विस हम परचेज करना चाहते हैं, ठीक है ना? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो इस करंट लोकेशन थी, पुरानी लोकेशन थी, और करंट लोकेशन के केस में बैक टू द ऑल सर्विसेज, गो टू द जनरल टैब। अब देखिए यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट? राइट सर। In resource group, we are able to find, we just need to click n number of resources group we have already created as per the requirement, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो ये पुराना रिसोर्स ग्रुप है जहाँ पे हमने क्रिएट किया था, द रिसोर्स ग्रुप जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हम ये अपने रिसोर्सेज को वगैरह को रखेंगे, करेक्ट? यस सर। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए बिकॉज वी सक्सेसफुली मूव्ड आवर रिसोर्स ग्रुप ना। हमने इसमें से जो VMSS था ना, VMSS हमने मूव कर दिया है। तो VMSS कहाँ पे गया है अभी? AVD क्लास के अंदर। जब आप AVD क्लास ओपन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग सेट के नाम से हमने आई थिंक तैयार किया था, वो ट्रेनिंग सेट यहाँ पे अवेलेबल है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, so let's talk about another option. And और कौन सा ऑप्शन बचा था इसमें? Encryption ना? कॉन्फ़िगर एज्योर डिस्क एन्क्रिप्शन। और ये नीचे का सर पूरा बाकी, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर कंटेनर्स नहीं वाला, वो सेपरेट है ना, वो वो तो शायद अलग हो गया हो। कंटिन्यूअस इज अ पार्ट, अलग सेपरेट पार्ट। ओके। ठीक है, तो अबाउट द Azure disk encryption, see बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई VM परचेज करते हैं ना, किसी भी मेथड से, विद द हेल्प ऑफ ऑन डिमांड, विद द हेल्प ऑफ VMSS, किसी भी मेथड से जब आप मशीन को तैयार करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव रहती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव प्रॉपर तरीके से इनक्रिप्टेड रहती है, राइट? नाउ इफ यू वांट टू इनक्रिप्ट योर ड्राइव बाय सेल्फ, तो इसमें एक्टिव डायरेक्टरी कम इनटू द पिक्चर, बिकॉज जो कीज हम तैयार करेंगे, एडीज की जो कीज तैयार करेंगे इनक्रिप्शन के लिए, which is managed and controlled by the Active Directory services. तो ये छोटा सा टॉपिक है जो आई थिंक वी नीड टू कवर इट आफ्टर कंप्लीटिंग द पार्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, ताकि क्लियर रहे आपका भी कॉन्सेप्ट। इज इट फाइन? यस सर, ठीक है। इसको फिर हम एडी के साथ कवर करेंगे। योर वॉइस इज टू लो। तो हम इसको एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कवर करेंगे फिर। हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक तो ये इनक्रिप्शन का, और ये जो कंटेनर सर्विसेज है,
एक बार एडी कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर वाला भी सर, तो मतलब अभी तक हमने इसके 1 2 3 4 हमने सिर्फ एक ही वो सेक्शन कवर करा है इसका, कंप्यूट सर्विसेज का। मतलब एक ही जो, अगर आप नीचे जाएं एक बार कंप्यूट पे, तो सिर्फ कॉन्फ़िगर वीएम्स करा हमने, हाँ वो वाला पूरा पार्ट कर लिया, बट उसके अलावा कुछ अभी नहीं किया है हमने। पहले का, तीसरा और चौथा, तो मतलब 3 एरियाज उसके बाकी है। राइट। तो अच्छा, तो कल क्या कवर करेंगे सर हम? कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एडी का पार्ट, ताकि हम ये जो रिमेनिंग चैप्टर है वो कंप्लीट कर लें। नहीं हाँ, नहीं, वी क्यों? नीड टू स्टार्ट नेटवर्किंग, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी डीएनएस वगैरह समझने के लिए, एडी का मैटर अगर हम, तो इसके बाद हम ये नेटवर्किंग का पार्ट कंप्लीट कर देते हैं यहाँ तक, और देन एक्टिव डायरेक्टरी अच्छा, और फिर बाद में कंप्यूट पे आएंगे। लास्ट में फिर कंप्यूटर का आएगा, ताकि अपने पास एडी की इंफॉर्मेशन आ जाए। राइट। एंड फिर अच्छा, तो इसके बाद फिर कौन सा बचा? कंप्यूट, नेटवर्किंग, स्टोरेज, एडी। कंप्यूट एडी, वही एजूर एडी के बाद हम डिस्कस करेंगे। लास्ट ऑप्शन बचेगा एक एप्लीकेशन सर्विसेज का कंप्यूट के बाद। हाँ, और फिर बैकअप एंड मॉनिटरिंग वगैरह हाँ, रहेगा फिर। बैकअप तो नॉर्मल सा बात है। सर तो कितने दिन दूर लग रहे हैं अभी हम टारगेट से, मतलब पूरा खत्म करने में? देखो, अगर हम 2 आवर्स या 1.5 आवर्स चलते हैं ना, हम्म 2 आवर्स या सब वन कुछ एंड हाफ मिला, आवर्स सब कुछ हो जाने के। आज कितनी तारीख है? अभी आज 30th हो गई ना। हाँ सर, मैक्स टू मैक्स 10 या 12 अप्रैल, 12 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। आराम से 15 के पहले हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, बस ये यही चाहता हूँ कि इतना हो जाए, तो मैं एग्जाम सेट करनी है सर, और कुछ नहीं। वो थोड़ा टाइमलाइन है कंपनी की तरफ से भी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस पे ऑपरेट कर रहा हूँ नो वरी, कंप्लीट कर लेंगे। मैं। ठीक है सर, कल क्या टाइम पाएगा आपको? कल फ्राइडे सेम ही टाइम रखते हैं, है ना? सेम टाइम, 3 o'clock ना? ओके सर। हाँ ठीक, चलो डन। ओके सर, ओके सर, चलिए सर, थैंक यू सर, वेलकम। रिकॉर्डिंग विद सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी।